Hi, this is Noori Ilhami and welcome to my 7th vlog. This is about Barish or Waqt. हर चीज़ इतनी खूबसूरत हो जाती है बारिश में, अंदर बाहर, दिल के अंदर दिल के बाहर. But I decided to stay in और एक और पुराने फ्रेम को नई ज़िंदगी देने के बारे में सोचा मैंने. I'm glad कि मैंने सोचा because it turned out really good. So here I'm taking offset paper जिसको computer paper या chart paper जो भी आप बोलते हैं, and this is a very nice shiny silver color. ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है, but still I enjoy it from a distance for some reason. So this is a frame that we're gonna restyle, redesign. कुछ भी करेंगे, इसको नई ज़िंदगी बख्शेंगे आज. As you can see, it's very nice and it's not that old. अगर आप इसको पीछे flip करके देखें, it's still very new and sturdy. So just I took a scissor. अल्लाह के वास्ते में इतना पुरानी जंग लगी हुई थकी हुई कैंची मत लीजिएगा. And it was hard working with this. It was really hard. I don't know मैंने इसको इसी कैंची से क्यों निकालने की कोशिश की. I got hurt as well while doing this, so please be safe. Don't be like me. I'm using here black acrylic with brown golden color का एक shade acrylic का, and instead of mixing them both in a palette मैंने उसे right away frame के ऊपर लगाया है. This will give it a nice texture. Color खुद से create होगा. brown और black जहाँ जहाँ mix होंगे, it's gonna give it a nice blend. So मुझे यही वाला texture चाहिए था, so I did this. You guys can use spray paint or whatever you like. And here I took like a golden color, very shiny golden, and I'm just giving it a texture with my hand क्योंकि brush बहुत पुरानी चीज़ हो गई है. I regretted it later on. But it did turn out good. It looks so good in real, like sarangyo. जब आप फ्रेम को डिज़ाइन करें दोबारा से उसके अंदर की चीज़ों को बहुत केयरफुली निकालिएगा, because this is where you can actually screw up a little bit. ये जो फोम गत्ते वाली एक चीज़ होती है, अगर ये डैमेज हो गई, it's gonna change the entire look of the frame. Here I took the offset paper और उसके ऊपर मैंने अंदर वाला फ्रेम रखा है जो माउंटिंग होती है इसकी, so that डिज़ाइन हमारा आगे पीछे ना हो और perfectly उसके ऊपर बैठे. And then I took a compass प्रकार क्या होता है ये, I don't know, comment below कि क्या चीज़ होती है. खैर, so I'm making a circle. I'm making a signature calligraphy rose that I usually make. I made a small circle and then I make a big circle और उसके बाद छोटा सा tiny एक और circle just to take the margin. ठीक है. And here I'm using एक cheap किस्म की dollar ink, but it's really really good, so don't judge me. And I took मेरा absolute favorite wooden reed bamboo kalam, and here we start writing और ये वक्त भी गुजर जाएगा. See, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं पहले लिख रही हूँ इसको एक प्लेन पेपर पे. If you recently start doing calligraphy, आप जब भी उसे किसी सरफेस पे करने वाले हो, like कैनवस पेपर, अगर आप मेरी तरीके से रिक्रिएट कर रहे हैं किसी फ्रेम को, डू इट ऑन डिफरेंट पेपर पहले. दिस इज़ गोना गिव यू अ चांस. अगर आपको डर है कि आप ख़राब कर देंगे, दिस विल बी रियली गुड, और एल्स यू डोंट वांट टू स्क्रू इट अप ऑन द मेन पेंटिंग और ड्राइंग और स्केच जो भी आप बना रहे हैं.
एवरी टाइम यू वर्क ऑन ऑफसेट पेपर या कंप्यूटर पेपर, मेक श्योर कि ना तो आप बहुत ज़्यादा इंक लें ना बहुत कम, क्योंकि इन दोनों केसेस में आपको दोबारा हाथ नहीं फेरना है लिखे हुए लफ्ज़ पे। एक दफ़ा आपने लिख दिया, यू कांट overdo it, like दोबारा दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा नहीं कर सकते, it's gonna damage the paper real bad, so please make sure of that. Here I'm trying to create a flower with ink, and this is my favorite design. Like, this is my signature style. I've created it with so much love, and this is something that have deeper meaning for me. Someday I'm gonna make a complete video about how I developed this style, this design. For the detailing, I'm using a dip pen, ink से उसको dip करके, and mine, the one that I have is Speedball company का, and I'm using average जो इसकी standard nib है, वही वाली nib, nothing special. But this pen is really old, like I have it since 2016, I guess. चीज़ों को खोलना तो बहुत easy होता है, but putting them back was really hard. Like, this frame gave me so much anxiety इसको दोबारा लगाते हुए, but somehow we did it, alhamdulillah. And I used ये वाली बड़ी वाली yellow color की tape, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, just to fix it back, and एक पुराना सा wool का धागा, because it's very sturdy. It's gonna hold up your frame अगर आपको इसको कहीं लटकाना हो. क्या मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ? Loop it through, and voila, we're done. So that was my rainy day, and since I'm on a detox, so no coffee, no tea, we're having green tea here. I hope you had a good Barish as well. Please like and comment and share my videos if you like them. Peace out. That I want. कुछ बोलना नहीं.